ओके, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो मैंने कल कुछ रखे थे आपके लिए, कुछ एक्सरसाइजेस की आपने वो तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैंने रखी थी दैट वाज डोमिनियन इज अ सब सेमी ग्रुप ऑफ एस। तो ये इंक्लूजन आपने देखा, डोमिनियन लाइज बिटवीन यू एंड एस। यू अगर सब मोनाइट होगा एस का, then this thing holds this। और एक्चुअली ये जो इंक्लूजन है ना, इसी पर सारी रिसर्च हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं इसकी मतलब ये जो इंक्लूजन है ना, मतलब कब ये प्रॉपर सबसेट होगा, कब ये इक्वल होगा यहाँ से, कब यहाँ से इक्वल होगा, कब प्रॉपर होगा। तो दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप ग्रुप्स में जाओगे ना, वहाँ पर ये मतलब सारा ये ट्रिवियली होता है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे ग्रुप्स के केस में क्या होता है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंक्लूजन। तो मैंने एक्सरसाइज ये रखी थी, ये जो डोमिनियन है, डोमिनियन ऑफ यू इन एस, इट्स अ सबसेट ऑफ एस एंड इट कंटेन्स यू। तो मैंने ये बताया था कि ये सब मोनाइट है एस का, इट्स अ सब मोनाइट ऑफ एस। तो एस इज अ मोनाइट। तो इसको सब मोनाइट प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो दैट मीन्स you choose any two elements from the dominion and you will show that their product is again in dominion. So exercise ये थी, let U be a submonite, let U be a submonite of a monoid S. Then show that dominion of U in S is a submonoid of S, is a submonoid of S. Solution. So let's take any two elements. Let D1 D2 belongs to dominion of S। हमें प्रूव क्या करना है? We show that the product D1 D2 it's also in the dominion। तो किसी एलिमेंट को डोमिनियन में लाने के लिए आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी डोमिनियन की, है ना। सो दैट मीन्स यू टेक एनी टू मॉर्फिज्म्स बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा। जैसे मैंने ये कहा ना, जैसे जब हमने इसको डिफाइन किया था, मैंने लिया यू सब मोनाइड एस का, फिर मैंने कहा कोई एलिमेंट डी जो होगा, जो कि एस का एलिमेंट है, मैं कहूँगा ये डी एलिमेंट डोमिनियन में है। अगर आप कोई भी दो मॉर्फिज्म्स लो, गिव फ्रॉम एस टू टी वेयर एस इन टी, एस इज मोनाइड एंड टी इज आल्सो मोनाइड, such that they agree on the elements of U, it should imply they should agree at T. They should agree at D. Then we say that this D is dominated by U and this D belongs to dominant. Okay? क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स जो U से डोमिनेट हो रहे हैं उस सेट का नाम है डोमिनेंट, दैट इज दिस सेट डोमिनेंट ऑफ S। वो सारे एलिमेंट्स जो U से डोमिनेट हो रहे हैं। अब आपके पास क्या है? आपके पास D1 डोमिनियन में है, D2 भी डोमिनियन, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रूव करना है D1 D2 डोमिनियन। तो इसको प्रूव करने के लिए अगेन यू टेक एनी टू मॉर्फिज्म्स बीटा गामा बिटवीन द मोनाइड्स S and T सच दैट U बीटा इज इक्वल टू U गामा, है ना। डोमिनियन ऑफ U इन S में आपको प्रूव करना है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है D1 D2 इट इज डोमिनेटेड बाय U, ये आपको प्रूव करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब आप स्टार्ट कैसे करोगे प्रूफ? आपको प्रूव करना है ये एलिमेंट डोमिनियन में, इन अदर वर्ड्स आपको प्रूव करना है ये जो एलिमेंट है D1 D2 ये U से डोमिनेट हो रहा है। डोमिनेट को मैंने डिफाइन किया है ऑलरेडी। सो डोमिनेटिंग मीन्स दैट इफ वी टेक एनी टू मॉर्फिज्म्स बीटा एंड गामा बिटवीन द मोनाइड्स S and T where T is any monoid, such that these two morphisms they agree on U. Agree on U means they are equal at each at every element of U. That should imply they also agree
एट दिस एलिमेंट, अगर उसने ये किया, ये इम्प्लाई किया कि वो दो मॉर्फिज्म्स इस प्रोडक्ट पर भी एग्री हो रहे हैं, so that means this product is in the dominion. So let's take any two morphisms. Let beta gamma from S to T be any two morphisms, any two monoid morphisms. तो जब मैं monoid morphism की बात करूंगा, it means that is a monoid. Okay, be two monoid morphisms such that u beta is equal to u gamma for all u in u. आपको प्रूव करना है. अब ये एग्री d1 d2 पर भी हो रही है. Now it is given that d1 is in dominion, मतलब d1 u से डोमिनेट हो रहा है. तो अगर d1 u से डोमिनेट हो, इसका मतलब है कि d1 बीटा इज इक्वल टू d1 गामा, और d2 भी d से u से डोमिनेट हो रहा है, ये डोमिनियन में है. Now let's look at the product d1 d2 of beta. Since beta is a morphism, it is d1 beta, d2 beta. Now this one d1 beta is d1 gamma, d2 gamma. So that means this is again the morphism property d1 d2 of gamma. So beta and gamma, they also agree at d1 d2, which implies that d1 d2 belongs to the dominion of u in S. So thus dominion of u in S is a submonoid of S. ये submonoid है इसका. और एक एक्सरसाइज मैंने रखी थी, वो आप खुद देख लेना. That closure property. Now there is a close connection between the dominion and epimorphism. That's why this dominion is very important, because it has a connection with epimorphism, and epimorphism is very important in the category of semigroups. So first I will recall the definition of epimorphism here. Epimorphism. Okay. A morphism, a monoid morphism. Okay, हम monoid में है. A monoid morphism alpha between the monoids S and T. जब मैं monoid morphism कहूँगा, it means that S and T are monoids. Okay, a monoid morphism alpha from S to T is said to be an epimorphism. Said to be an epimorphism if for is epimorphism alpha beta there from S to T, from T to U. Okay, if for any monoid W, okay, for any monoid W, and for all monoid morphisms, beta gamma from T to W, this alpha beta equals to alpha gamma, this should imply beta is equal to gamma. That means this alpha is left cancellative. You can see. तो आपके पास क्या है? अल्फा है फ्रॉम S to T, और बीटा गामा कहाँ से कहाँ तक है?
from T to W. Okay, so that means alpha beta और जो आपके पास है alpha gamma, they are from S to W. Okay, S to W है composition. So alpha beta equal to alpha gamma, this should imply beta equal to gamma. Then we say this alpha is an epimorphism. So exercise. Every surjective morphism is an epimorphism. ये शायद पहली लेक्चर में मैंने किया है डिस्कस. But converse is not true. Converse is not true in general. In semigroups, okay, semigroups are monoids. In monoids or semigroups, दोनों में true है. Okay, so let's see the connection between epimorphism and domain. And the connection is it's the following exercise. A monoidmorphism alpha from S to T. A monoidmorphism alpha from S to T is an epimorphism. Okay, epimorphism. If and only dominion of image of S under alpha, okay, or you can write image of alpha here, in T is equal to T is equal to T. Okay, what's this image of S under alpha? It's a submonoid of S. Okay, if this submonoid of S, अगर S का submonoid होगा, इसका dominant जो T में होगा वो T के बराबर होना चाहिए. If and only if alpha is epi. Solution. Suppose alpha from S to T is epi. Okay, suppose it is an epimorphism. We show that dominion of image of S and alpha in T is equal to T. One thing, this is always subset है ना, ये हमेशा dominion of U in S is always subset of S. यहाँ पर S की जगह पर T है और U की जगह पर S alpha है. That's a submonoid of T. So हमें ये prove करना है. So by definition, one inclusion is trivial. By definition, this dominion S alpha in T is always subset of T. So now let's take T in T. कि T of T में लीजिए, हम प्रूव करेंगे T dominion में है. T is in dominion. So we show that. It's very simple. Now we show that T belongs to dominion. तो अगेन आपको प्रूव करना T डोमिनियन में, तो उसके लिए आप क्या करोगे? यू टेक एनी टू मॉर्फिज्म्स बीटा गामा फ्रॉम द मोनोइड टू T to any other monoid W से, such that they agree on S alpha. वो S alpha पर है, जो your sub monoid is here S alpha, and you show that they also agree on T. So to see this, let's take let beta gamma from T to W be any two monoid morphisms.
be any two monoidmorphism such that u beta is equal to u gamma for all u in the submonad, that's S alpha. Okay, so it's true in S alpha. So where is T? Okay, this is T is in T. Okay, T is in T, alpha is P from S to T. So how do I prove it here? This is in S alpha. Okay, so for all S in this, so we show that अल्फा, क्योंकि हमें एक्चुअली अल्फा एपी है उसका यूज़ करना, तो हम प्रूव करेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा गामा, वहाँ से हमें मिल जाएगा बीटा इक्वल्स टू गामा. ओके, सो लेट्स सी दैट अल्फा बीटा कहाँ से कहाँ तक है. अल्फा is from S to T, alpha is from S to T and beta is from T to W, so it is from S to W. इसी तरह से अल्फा गामा भी है कहाँ से कहाँ तक, S to W. तो हम प्रूव करेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा गामा. फॉर दिस लेट्स टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम S, लेट S belongs to S. दिस इम्प्लाइज देन ये जो इमेज होगी ना S के अंडर अल्फा, दिस इज इन, ये किस में होगी, ये S अल्फा में होगी, इमेज ऑफ S अंडर अल्फा में. बट S अल्फा में जो भी एलिमेंट है वहाँ पर उसके लिए, उस एलिमेंट के लिए ये बीटा और गामा इक्वल है, और S अल्फा भी S अल्फा का एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट पर भी ये इक्वल होगी बीटा गामा इस एलिमेंट पर. ओके, this implies S alpha beta by the definition of composition is equal to S alpha gamma. So it's true for each S in S, क्योंकि S कोई भी एलिमेंट है S का, हर किसी S के हर किसी एलिमेंट पर S alpha beta is same as S alpha gamma. That means the mapping is must be equal. Alpha beta is equal to alpha gamma, which implies that beta equal to gamma, because alpha is an Epi morphism. शॉर्ट में इसको Epi कहते हैं. ओके, बिकॉज अल्फा इज एन Epi. तो बीटा किसके बराबर आ गया, गामा के बराबर. बीटा कहाँ से कहाँ तक मैप है, इट्स फ्रॉम T to W. तो T to W पर T से W तक ये मैपिंग है दोनों बीटा और गामा, और ये इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये T के हर किसी एलिमेंट पर क्या होगी, इक्वल. तो T तो ऑलरेडी आपने लिया है T का एलिमेंट. दिस मीन्स दैट T बीटा इज इक्वल टू T गामा, because beta and gamma, their mapping is from T to W and T belongs to T and beta is equal to gamma. So that means T is in the dominant. T dominate हो गया ना, T is dominated by S alpha. Okay, that means T belongs to the dominion of S alpha in T. So T का हर कोई एलिमेंट डोमिनियन में है. दिस मीन्स दैट T इज सबसेट ऑफ, so therefore equality holds. Dominion of S alpha in T is equal to T. So conversely assume that this dominion is equal to T, you show that alpha is P. ये आप खुद देखोगे. okay, conversely assume that dominion of S alpha in T is equal to T. आपको प्रूव क्या करना है, we show that alpha is Epi. We show that alpha from S to T is an Epi morphism. Is Epi. इसको आप देख लीजिए इस पार्ट को. So next we discuss spatial semigroup ML1.
spatial semigroup amalgam. semigroup amalgam हमने किया है ना. तो सबसे पहले मैं वीकली एम्बेडेबल की डेफिनेशन दूंगा. semigroup क्योंकि एम्बेडेबिलिटी की दो प्रॉपर्टीज होती है ना, दो प्रॉपर्टीज आपने जो डिफाइन किया है. वीक एम्बेडेबिलिटी की सिर्फ पहली वाली प्रॉपर्टी होती है. तो यहाँ पर मैं इसको पहले डिफाइन करूँगा क्योंकि मुझे एक्चुअली प्रूव करना स्पेशल सेमीग्रुप एमएलगम्स आर ऑलवेज वीकली एम्बेडेबल. ओके, तो इसके लिए मैं इसको अलग से यहाँ पर डिफाइन करूँगा. सेमीग्रुप एमएलगम A, which is this list U, S I and phi I, is said to be weakly embeddable, is said to be weakly embeddable in a semigroup, in a semigroup T. Okay, if there exists monomorphism. The definition is कि lambda from U to T and for each I in I a monomorphism lambda I from Si to T such that the diagram, अब diagram ही लिखूंगा बस, such that the diagram, this square diagram, okay, this is the diagram. It's U first, it is here Si and here it's Sj, okay, this one is phi j, this one is phi I, and from Si to and from Sj this is T here, and this one is lambda I and this one is lambda j, and from U to T there is a monomorphism, that is lambda, such that this diagram commutes. That is commutes का मतलब क्या है? That is वही जो पहली प्रॉपर्टी है. That is phi I lambda I is equal to phi j lambda j equals to lambda for all I j. That is phi I lambda I equal to phi j lambda j and all are equal to lambda for all I j. तो ये प्रॉपर्टी है वीकली एम्बेडेबिलिटी. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स डिफाइन स्पेशल सेमीग्रुप एमएलगम. Let's define spatial semigroup amalgam. Okay, so for this we take a submonoid of a monoid S and we take the isomorphic copy S prime of S by means of a certain isomorphism alpha from S to S prime. Then we take the following amalgam. Okay, so let's define it. Spatial semigroup. Spatial semigroup. Spatial semigroup amalgam. Let U be a submonoid of a monoid S and let alpha from
S to S prime, S and S they are disjoint, but there is an isomorphism, be an isomorphism, be an सेमीग्रुप एमलगम में क्या क्या होता है? एक तो कोर होता है, सेकंड इज द लिस्ट ऑफ सेमीग्रुप्स एंड थर्ड वन इज द लिस्ट ऑफ मोनोमॉर्फिज्म्स. अब यहाँ पर क्या है, आपके पास कोर U है और लिस्ट ऑफ कोर आपका U है, दैट्स अ मोनाइड, और जो लिस्ट ऑफ मोनाइड्स आपके पास है या लिस्ट ऑफ सेमीग्रुप्स वो है S एंड S प्राइम, एंड द लिस्ट ऑफ what? List of these monomorphisms. The first monomorphism is the inclusion map I from U to S, because U is a submonoid of S, so we can define the inclusion map. That's the first. तो वो मोनोमॉर्फिज्म कहाँ से कहाँ तक होती है? U से लेकर इन सेमी ग्रुप्स तक या इन मोनाइड्स तक. यहाँ पर आपके पास दो मोनाइड्स हैं, S एंड S प्राइम. तो फर्स्ट जो मोनोमॉर्फिज्म है U से लेकर S तक, दैट इज inclusion map. And second monomorphism जो है, that's a restriction of this alpha to U, because U is a submonoid of S. That's the second monomorphism. Okay, so that's our spatial semigroup amalgam. That's our spatial semigroup amalgam. So this is an isomorphism, and for each and for each S in S, and for each S in S, for each S in S, तो इसकी जो इमेज है उसको मैं S प्राइम से डिनोट करूंगा. ओके, एंड फॉर ईच S in S we write image of S under alpha equals to S prime. So that's the standard notation. तो जब भी मैं किसी एलिमेंट का प्राइम लूंगा, इट मीन्स दैट इट्स इमेज ऑफ दैट एलिमेंट. S प्राइम मीन्स इमेज ऑफ S. अगर T प्राइम होगा, दैट मीन्स इट्स इमेज ऑफ T अंडर अल्फा. ओके, so that's a standard note that you follow. So the amalgam of the form, this is form amalgam. U second is the list of monoids, that's S and S prime, and third is the set of morphisms from U to S and U to S prime. First one is the inclusion map I, and second one is alpha restricted U. Okay, alpha restricted U. This is the horizontal line here. Alpha restricted U. Okay, so it's square bracket. Okay, it's square brackets. Amalgam is always in square brackets. So the amalgam, this of the form is called spatial. इसने यहाँ पर इसका नाम नहीं लिया है, but it's called spatial semigroup amalgam. Spatial semigroup, spatial semigroup. तो हम प्रूव करेंगे इट्स वीकली एमेडेबल इन इट्स फ्री प्रोडक्ट. ओके, क्योंकि जब भी कोई एमलगम एमेड हो रहा है तो वो हमेशा इसके फ्री प्रोडक्ट में ही एमेड होगा. तो अगर ये वीकली एमेड होगा तो ये वीकली एमेड भी इसके फ्री प्रोडक्ट में ही होगा. और वहाँ पर भी आपके पास नेचुरल एम्बेडिंग्स है, नेचुरल इंक्लूजन मैपिंग्स है, और यू कैन सी दीज नेचुरल मोनोमॉर्फिज्म्स है वहाँ पर. थीटा आई फ्रॉम एस आई टू दैट द फ्री प्रोडक्ट, ऑर्डिनरी फ्री प्रोडक्ट जो आपने डिफाइन किया है, थीटा आई, विच मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ एस आई टू इट्स सिंगल एट्रीब्यूट. तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास दो ही मोनाइड्स है एस एंड एस प्राइम, तो यहाँ पर जो वर्ड्स होगी उनकी लेटर्स होगी, या तो एस से होगी आ जाएगी या वो एस प्राइम से आ जाएगी. So let theta from S to this free product as S prime, and theta prime from S prime to
S star S prime be, so these be the standard inclusion maps. Standard inclusion maps, and they are defined by, इनके को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है एक्चुअली. They are defined, this theta maps S onto its single letter word, okay, single letter word which that letter comes from S, and S dash of theta dash, it's a single letter word S dash. तो इसके बाद आप एक्चुअली फिर म्यूवाइज डिफाइन कर रहे हो, जो आपको प्रूव करने हैं वो मोनोमॉर्फिज्म्स है. सो नेक्स्ट व्हाट्स दिस mu is equal to theta from S to that free product, then sorry S star S prime क्या है? okay, S star S prime, S star. अब देखिए जहाँ पर हमने फ्री प्रोडक्ट को डिफाइन किया ना, आपके पास गिवन फैमिली ऑफ सेमी ग्रुप्स है, I is in the index set I, they are disjoint फैमिली. फिर आपने इस प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट किया है SI को, it's a set of the finite words A1 A2 AN, where these letters they come from these semigroups. Okay, so they belong to these SIs. AI belong to AJ belongs to union SI, okay, where I is in the index set I. So this is called the free product of, इसको आपने फिर F से डिनोट किया था अगर आपको याद होगा, F free product of the disjoint family of semigroups. अब हमारे इस केस में क्या है, आपके पास दो ही सेमीग्रुप्स है S एंड S प्राइम. अब इन दो का फ्री प्रोडक्ट हम लेंगे F, दैट्स वो हम डिनोट करेंगे इससे S स्टार S प्राइम से, क्योंकि आपने वहाँ पर डिस्कस किया था अगर I इंडेक्स सेट हो, ये इंडेक्स सेट फाइनाइट होगा 1 to n, तब जाके ये जो फ्री प्रोडक्ट है SI स्टार, दिस फ्री प्रोडक्ट, इसको आपने डिनोट किया था S1 स्टार S2 स्टार स्टार SN. शायद यहाँ पर जरा ये स्टार है नोटेशन ना, प्रोडक्ट स्टार कुछ ना, फ्री प्रोडक्ट की नोटेशन. तो यहाँ पर आपके पास क्योंकि दो ही मोनोइड्स है तो ये फ्री प्रोडक्ट ऐसा होगा S स्टार S प्राइम, S स्टार S प्राइम. और इसके बाद आपने मैपिंग्स डिफाइन की थी, थीटा I फ्रॉम SI टू दैट फ्री प्रोडक्ट, which the free product is the set of the words. तो इसमें डेफिनेशन क्या है, it maps each SI to the single letter word. अब इस केस में भी आपने फिर दो मैपिंग्स डिफाइन की, एक को आपने थीटा से डिनोट किया which is from S to P F, S to F, okay, S to this product S star S prime, and second is theta prime which is from S prime to S star S prime. तो ये है यहाँ पर है. और उसके बाद जो आपने किया था दैट्स उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद फिर आपने इस फ्री प्रोडक्ट को फैक्टर किया था कॉन्ग्रुएंस से, है ना, कॉन्ग्रुएंस से आपने इसको फैक्टर किया था कॉन्ग्रुएंस से. सो लेट फिर ये सारा आपने किया है, बट अब आप स्पेशल केस लो, लेट रो be the congruence generated by, okay, generated by this relation R, which is this u phi I theta I. यहाँ पर phi I theta I नहीं है, यहाँ पर एक तो इंक्लूजन मैप है, u इंक्लूजन मैप I, एंड थीटा I की जगह पर थीटा है पहले, और सेकंड एंट्री क्या है इसकी u phi j theta j, जो सेकंड मॉर्फिज्म है वो है अल्फा रेस्ट्रिक्टेड u, okay, and theta prime, this one, such that u is in u. और इसको अगर आप u is in u, sorry, u belongs to u, and this is the set IU, it's I is the inclusion map, it's IU means u theta, okay, और alpha restricted of u is same as u alpha
क्योंकि आप उसको यहाँ यू पर अप्लाई करो, यू अल्फा थीटा प्राइम, या अगर आप अल्फा रेस्ट्रिक्टेड यू रखना चाहते हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इट्स यू इज इन यू. तो इस रिलेशन से रो जनरेट हो रही है, एंड दिस इज द रिलेशन ऑन वाई, दिस इज रिलेशन ऑन वाई, दिस generated by R, generated by a relation. Okay, this on, ये relation कहाँ पर है, ये है इस पर, S टेंसर S प्राइम, तो फ्री प्रोडक्ट है ना, उस पर ये रिलेशन डिफाइन की गई है. सो रो कॉन्फिडेंस है. So then this row natural, it's a natural morphism, natural surjective morphism from F, or from this S star S prime to its quotient S star S prime over rho. So then this row natural, which is a morphism from, so it's S star S prime, S star S prime to S star S prime over rho, that is rho natural. It's a map from F to P. This is your P. अब हमें वो मैपिंग्स डिफाइन करनी है, एक तो S से लेकर इस P तक, एंड सेकंड म्यू डैश फ्रॉम S dash या S prime to P. Let this be defined by इनकी डेफिनेशन क्या है, be defined by mu is equal to, पहले आपको देखना कि S से लेकर F तक कौन सी मैप, S से लेकर S star S prime तक कौन सी मैप है, वो है थीटा. ओके, देन S star S prime to this P कौन सी मैप है, रो नेचुरल, ये आप ऐसे डिफाइन करोगे. एंड म्यू प्राइम, इट्स ऑब्वियसली थीटा प्राइम रो नेचुरल. So now one can easily verify that. Now one can okay, let's define now. Finally define mu. Finally don't need to define mu actually. तो जो आपने definition लिखी है ना, so I think we don't need of mu here. We don't need of mu here. That's always there. Okay, it will not create any problem. So let's erase this here. Okay. So now we have following theorem. Let us say this theorem. Let S be a monoid. Let S be a monoid, and let U be a submonoid of S. U be a submonoid of S. And S prime is disjoint from S. Let S prime be disjoint from S, but it is isomorphic to S. Disjoint from S, and there is an isomorphism. Let alpha from S to S prime be an isomorphism. Be an isomorphism. This be an isomorphism. And that P जो कि है, that's a free product, amalgamated free products, S star S prime U. Okay, so U means you are taking actually quotient, you are taking actually this one, S star S, जो हमने अभी define किया over rho. B, this be the free product, this be the free
product of the amalgam of three product of the amalgam. What's the amalgam? That's a spatial semigroup amalgam. A, which is consisting of U and consisting of these two monoids S and S prime, and these two monomorphisms inclusion map I and alpha restricted U. Okay, where I from U to S be the inclusion, be the inclusion map of U into S. Then you show that then you need to show that this mu and mu day जो आपने अभी define किया, mu and mu day जो आपने define किया, then they are monomorphisms. Okay, then so monomorphism means and they obviously they commute the diagram. Then mu from S to P and mu prime from S prime to P defined by, then these two mappings defined by mu is equal to theta rho natural and mu prime is equal to theta prime rho natural, or monomorphism or monomorphisms, and the diagram this diagram U S S prime, this is P, this one is mu, this one is mu prime, this one is the inclusion map, this is alpha restricted to U, and the diagram commutes. That's A is weakly admittable. A is weakly, the spatial semigroup amalgam is weakly embeddable. Actually, this is the theorem. Spatial semigroup amalgam is weakly embeddable. So first we verify that this diagram commutes, actually this one. Okay, so I mu is equal to alpha restricted to U mu. Okay, proof. First we verify that I mu is equal to alpha restricted to U mu prime. Okay, so for this we choose an element U in U. Let U belongs to U. We have I, oh sorry, it's U here, U of I mu, that's equal to, जब मैं I square apply करूँ, it's just U mu because I of U is U, it's U mu. Now what's this U mu? It's U, what's this mu? Mu is theta rho natural, that's equal to U theta of rho natural, and that's the rho class of U theta. But rho class of U theta is same as rho class of U alpha restricted U theta prime. Okay, because these two are rho related.
एंड आप इसको वापस एक्सपेंड करोगे, दिस वन, दिस इज इक्वल टू, आपको ये आ गया, दिस इज इक्वल टू यू अल्फा रेस्ट्रिक्टेड यू ऑफ रो, ओके. नाउ दिस विल बी द यू अल्फा रेस्ट्रिक्टेड यू ऑफ रो नेचुरल. अब अल्फा रेस्ट्रिक्टेड यू को आप बाहर निकाल सकते हो. नाउ दिस मैप you can compose these two row natural, and this one is what, this one, okay, alpha restricted u of mu dash, okay, mu dash, what's mu dash, what's mu dash, mu dash कौन सी मैप है? So this should be equal to alpha restricted u and then mu prime, okay, mu prime. Let's again here, this is ui mu equal to this. Okay, so this thing, what's this actually, this composition, this is from u to alpha restricted. So there is some problem, there is some problem. Let me see it again, ui mu, that's equal to u of mu, it's okay. Then this mu is equal to theta rho natural, okay, mu is equal to theta rho natural. Where this theta goes, okay, this is same as this is same as this, theta prime is here, okay, theta prime is here, theta prime is here, theta prime is here, oh, theta prime is here, okay, theta prime is here, this is theta prime, okay, this is theta prime. So let me erase this here, this is theta prime, okay, and this one theta prime and rho natural, that's equal to mu dash, it's u alpha restricted to u of mu dash. So this is true for all u and u, so which means that inclusion map I mu is equal to alpha restricted u mu. So that means this square commute हो रहा है, okay. तो इसके बाद हमें प्रूव करना है these mu's are, they are monomorphisms. So next we show that, we show that mu and mu prime are monomorphisms. That's their one morphisms तो है ही, because they are the composition morphisms. So for this let's take any two elements, and let's take any two elements, okay. To prove they are one now since we have another commutative diagram here, let's see this first. We have a commutative diagram, and that commutative diagram is for S prime, commutative diagram, that's this U inclusion map S, then this one it's alpha restricted U, and here it's S prime, and here it's U alpha. So you can easily verify this. I composition alpha is equal to alpha restricted U composition the identity map, this is your S prime, okay, this is the identity map, because I composition alpha is same as alpha restricted U composition the identity.
So both are, this thing is alpha restricted U because it's I is the inclusion map from U to S. So that means I alpha is actually map from U to S. Okay. So U to S, which is equal to alpha restricted U. And on this side it's also alpha restricted U. So this is a commutative diagram. So that means we have two commutative diagrams. One is for P, जो आपने B ऊपर लिखा है. This is for P, but P is a push out of this diagram. तो P के लिए तो ये प्रॉपर्टी होती है, it's a push out of this diagram. So, but we have another monoid. That's here S prime, and for this S prime, this is the commutative diagram for S prime. So now we apply the property of P, which is actually the push out. So since P is the push out of which diagram? Push out of the diagram. Is the push out of the diagram from U to S and U to S prime. ये इसका push out है. U to S and U to S prime. P इसका push out. Okay. So therefore there exists a morphism. There exists a morphism, a unique morphism. Unique delta from P to S prime such that the diagram this one this commutes. So इसको हम यहाँ चेंज एक्चुअली आपके पास यू हैव टू फिक्स इट मोनाइड. सो आपको ये पूरा डायग्राम लिखना है. यू कैन नॉट यूज द नोटेशन दैट एस आई इज एक्चुअली. तो दोनों सेमी ग्रुप्स आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर. P is a push out, it's an S and this is mu. Okay. तो वैसे आपके पास जहाँ से ये मैप है म्यू प्राइम. Okay, it's here it is S prime. और जो मैप जो है that's mu prime. और इसके बाद ये आइडेंटिटी मैप है, क्योंकि एक्चुअली दोनों कम डायग्राम्स को एक्चुअली आप कंबाइन कर रहे हो. तो यू आर अप्लाइंग द पुश आउट प्रॉपर्टी हियर. This thing is this is S prime, this is alpha. सर म्यू डैश कहाँ से कहाँ तक? म्यू डैश है ना P से लेकर S डैश तक. सॉरी S डैश से लेकर यस S डैश. What's this? Okay, so this there is a delta from this to this. So it's the property of push out because P is the push out of the diagram. तो B से लेकर इस S डैश तक मैप एक्सिस्ट होगी यूनिक मॉर्फिज्म जो इस डायग्राम को कम्यूट कर रही है. Which commutes this diagram. Now let's check that mu and mu dash are monomorphisms. So for this let's take any two elements. What are these mu? Mu is from S to P and mu dash is from S dash to P. First we check that mu is 1 1. So let's take any two elements S1 S2 in S such that S1 mu is equal to S2 mu. अब हम इस पर दोनों साइड से डेल्टा अप्लाई कर सकते हैं. कैन अप्लाई द डेल्टा बिकॉज इट्स वेल डिफाइंड. S1 mu delta is equal to S2 mu delta. But then what's this mu delta? This mu, ये देखिए डायग्राम से, mu delta is equal to alpha. It's equal to alpha. So it means S1 alpha is equal to S2 alpha, which implies S1 is equal to S2 because alpha is isomorphism. That means it's 1 because alpha is 1. So that therefore mu is 1 1. Therefore mu is monomorphic. You can see mu is
मोनोमॉर्फिज्म। इसके बाद हम प्रूव करेंगे म्यू प्राइम भी मोनोमॉर्फिज्म है, म्यू प्राइम। तो इसके लिए हम क्योंकि वो एस डैश से मैपिंग है, सो लेट्स टेक S1 डैश। नाउ लेट S1 prime S2 prime belongs to S prime such that S1 prime mu prime is equal to S2 prime mu prime। अब यही डायग्राम एक्चुअली आपको यूज करनी है। अगेन यू कैन अप्लाई डेल्टा, because you can compose mu prime and delta। S1 prime mu prime delta is equal to S2 prime mu prime delta, but this composition is the identity map। This composition is identity map। It is S1 prime of 1 equal to S2 prime of 1। It's not the one that identity element, it's the identity map। It's identity map on S prime, okay, on S prime। So image of this S1 prime under this identity map is S1 prime, it is here S2 prime। So thus mu dash is also a monomorphism, is also a मोनोमॉर्फिज्म। ये मोनोमॉर्फिज्म आ गई। तो एक्चुअली फाइनली आपको मिला क्या, एक्चुअली आपको ये डायग्राम मिला है जिसमें ये मोनोमॉर्फिज्म्स हैं। तो उसी डायग्राम से एक्चुअली आप कंक्लूड करोगे दिस इज वीकली इनवेरिएबल। तो आपको फाइनली एक्चुअली आपको ये मिला, U से लेकर S तक, U से लेकर S प्राइम तक। हियर इट्स द इंक्लूजन मैप, हियर इट्स अल्फा रेस्ट्रिक्टेड U, और फिर यहाँ से P म्यू प्राइम, और ये इंक्लूजन इक्वल है और ये मोनोमॉर्फिज्म्स है। सो दस A इज वीकली एम्बेडेबल, इज वीकली एम्बेडेबल, A is weakly embeddable। This A is weakly embeddable।